नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे एंड इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं चाहता हूं आप 10 सेकंड लें और अटेंडेंस दे दें लाइक का बटन दबाकर। और आज का क्लास जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्लास होगा और ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आज का क्लास जो बीकॉम, एमकॉम या फिर नेट सेट का एग्जाम देने बैठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कर रहे हैं जो कि इन स्ट्रीम्स में जो कोर्सेज कराए जाते हैं जैसे एमकॉम हो गया, बीकॉम हो गया, नेट सेट का एग्जाम हो गया, इसमें बहुत वाइटल इसका सिग्निफिकेंस रहता है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होने वाला है। हम लोग सारे ट्रेड थ्योरीज को एक बार डिस्कस करेंगे अच्छे से, इन डेप्थ में। थोड़ा सा फास्ट पेस चलेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलूंगा मैं, ठीक है, वरना आपका फोकस ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। Alright, now let's move on to the next topic, which is comparative advantage theory. So this theory was propounded by David Ricardo, and also, this theory is also known as Ricardian theory of international trade. Right? This theory suggests that even if a country has absolute advantage in producing two commodities, it should focus more on producing one commodity which it can most efficiently produce, right? Which means that the country should produce commodity with least opportunity cost. So let us understand this point with the help of this example that I have drawn here. At a first glance, this may seem a little bit confusing to a normal person, but we will try to look into the figures and try to understand the opportunity cost involved in this numbers, right? So as you can see, there are two countries, A and B, and two commodities, bread and tools, right? So let's say country A is producing 20 units of bread and country A is producing 10 units of tools, right? And country B is producing 16 units of bread while country B is producing 2 units of the tools, right? So now we are going to understand the opportunity cost behind these figures, right? So let's say to produce 1 unit of bread, country A has to forego 0.5 units of tools, right? Simple unitary method, 0.5 tools, right? Then country B, to produce 1 unit of bread, has to forego 0.125 unit of tools. So like the opportunity cost of this here is lower, right? For country B, it is taking 0.125 unit of tools as opportunity cost, while country A is having 0.5 units of tools as the opportunity cost to produce bread, right? Now, to produce 1 unit of tool for country A, the opportunity cost here is 2 units of breads. Alright. Similarly, country B will incur opportunity cost of 8 unit of bread to produce 1 unit of tool. So, in simple words, and to sum the whole thing up, we can see that country A should produce tools, as country A is having a cheaper, or you can say like less opportunity cost of tools, right? So country B will produce bread, right, as it is having lower opportunity cost of producing the bread. Now we are going to look into the assumptions of this comparative advantage theory. So here are some of the assumptions. First is there are only two countries. Second is they are producing the same commodity, right? The commodities need to be same. And third assumption is both countries have similar taste and preferences. So taste and preferences and products must be similar for this theory to be applicable. Next assumption is labor is the only factor of production again. So labor cost is the only cost of production that has to be incurred. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एमकॉम, बीकॉम या नेट सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए, ठीक है। जहां तक हो सकेगा मैं उन डाउट्स को एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।